गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक पे। पॉलो फ्रेयर जो है एक ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट रहे हैं। तो यहाँ पर आप उसको देख रहे हैं 1922 और 1970 1922 में उसकी बर्थ हुई, 1977 में उसकी डेथ हुई। तो उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, तो मगर यहाँ से देख रहे हैं यही है उसकी जो पिक्चर पॉलो फ्रेयर। आज हम विजिट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में बने रहे लास्ट तक, सो दैट हम विजिट करेंगे उसका जो एजुकेशन फिलासफी ऑफ पॉलो फ्रेयर है, उसने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो क्योंकि ये जो एम है हमारा सेकंड सेम, उसमें जो फिलासफी में एक क्वेश्चन है पॉलो फ्रेयर के बारे में, उनका रेडिकलिज्म एंड कंसंट्रेशन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलो फ्रेयर वाज ए ब्राज़ीलियन एजुकेटर हु मेड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट not only in the education but also in the overall struggle for educational development in the third world Asian countries. The methodology he developed for the education was considered to be the threat for the established order of quite some time, and he was jailed for 70 days and later on forced to leave Brazil for 20 years. अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है ये ब्राज़ीलियन एजुकेटर था, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाया एजुकेशन पर, ओवरऑल स्ट्रगल ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। तो उसमें द मेथोडोलॉजी ही डेवलप फॉर द एजुकेशन वाज कंसिडर्ड टू बी द थ्रेट फॉर द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। तो जो उसने मेथोडोलॉजी बनाई थी उस पर बहुत सारे उन्होंने इसको मतलब ओबस्टिकल किया कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसको जेल हुई बहुत सारे दिन, 70 डेज़ तक। तो ब्राज़ील फिर उसको अपना जो मुल्क है उसको लीव करना पड़ा। Born in 1922 in the Recife, the center of one of the extreme situation of the poverty and under the development of in the third world, he experienced the situation directly. The economic depression of the 1930s hit frail and middle class family, and his studies got disturbed, and he fell behind. In school, he was so disturbed about it, and he was vowed to be himself at the age of the 11 that he would dedicate his life to the struggle against the hunger, so that the other children would not really have to face anxiety he was then experiencing. तो ये पहला स्लाइड जो है इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ हिस्ट्री इसमें डायरेक्ट है, आप इस स्लाइड को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एजुकेशन में। दूसरा, he got his PhD in 1959 from the University of Recife and later worked as a professor of history and philosophy of education in the same university. At the same university, he continued his experiments with the teachings of the illiterate. The methodology became very popular and began to use it widely. तो ये important है। The Freire spent 5 years of working with the UNESCO and the Children's Institute for agrarian reform in the programs of adult education. He also worked at the various other institutions and received honorary degrees from 29 universities in Europe and Northern America. तो ये है इसका थोड़ा बहुत ही देख सकते हो कहाँ से PhD किया है, क्योंकि उसकी बायोडाटा ज़रूरी है। उसकी जो पब्लिकेशन है उसमें नंबर 1 जो है पब्लिकेशन, Freire wrote all together 20 books which are translated to more than 18 languages, out of which Pedagogy of the Oppressed is the most famous, written in 1970. Pedagogy of the Oppressed उसने बुक लिखी है, ये फेमस है उसकी बुक। तो उसने क्या बोला है, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेटिंग द ऑप्रेस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है उसको। Paulo Freire is considered as the representative of the response of the creative mind and sensitive sense consigned to the enormous misery and sufferings of the oppressed. He argues that the ignorance and lethargy of the poor are direct result of the entire situation created by the economy, social, political domination of the few. By being kept in such a situation, the disadvantages are kept submerged. तो ये इंपॉर्टेंट है, उसने क्या बोला है आप यहाँ से देख सकते हो। तो उसमें है, अकॉर्डिंग टू द फ्रायर, ह्यूमनाइजिंग एजुकेशन इज द पाथ थ्रू विच मैन एंड वुमेन कैन बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। तो एजुकेशन के ज़रिए से हम आप जो वुमेन ऑफ है उनको हम अवेयर कर सकते हैं, जो उनके राइट से बाकी जो दुनिया में मतलब रह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने कंसंट्रेशन का सेंस, जो कंसंट्रेशन मिजरी जो सप्रेस्ड और इस फोक को होता है, किस तरह से वहाँ से निकल कर एक नया हम रुझान लाएंगे, उसमें एजुकेशन एक ह्यूमनाइज पावर है, उसमें एजुकेशन का अहम रोल है। उसमें जो गोल्स ऑफ एजुकेशन उसने बोला है कि एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, पावर अवेयरनेस होना, क्रिटिकल लिटरेसी, डिसोशलाइजेशन एंड सेल्फ एजुकेशन पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। बच्चों में हमें एक अवेयरनेस पैदा करना है, सेल्फ एजुकेशन पे जोर दिया है, क्रिटिकल लिटरेसी, पावर एंड डिसोशल। अब यहाँ पर है उसका जो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, आप देख सकते हो इस स्लाइड में। बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन उसी ने दिया है। Freire has introduced the new terminology of banking concept in education. In other words, the teacher turns the students into the containers, into their receptacles to be the filler. So education thus becomes an act of depositing, in which the students are the depositories and the teacher is the depositor. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हो। बैंकिंग कंसेप्ट उसने दिया है।
तो उसमें है बैंकिंग में अब देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर टॉट, यहाँ पर है द टीचर नोज एवरीथिंग एंड द स्टूडेंट्स नो नथिंग, द टीचर थिंक्स एंड द स्टूडेंट्स आर, इसमें है थ्रू अबाउट द टीचर टॉक्स एंड द स्टूडेंट्स लिसन, द टीचर डिसिप्लिन्स एंड द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड। अब यहाँ पर है इसमें बैंकिंग का जो बैंकिंग सिस्टम जो है उसने हाईलाइट किया है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें है द टीचर chooses and enforces his choice and the students accompany. The teacher acts and the students have the illusion of acting through the action of the teacher. The teacher confines the authority of the knowledge which is his own professional authority, which he sets in opposition to the freedom of the student. The teacher is the subject of the learning process while the pupils are more objective. The banking system reduces the creative power of the students. तो यहाँ से जो बच्चे हैं उनकी जो क्रिएटिव पावर है वो ख़त्म हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ जो एजुकेशनल है उसमें हम देख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ द Frere's educational ideas. Frere's ideas are the rebel and such they are too revolutionary to be translated into the practice in the democratic setup. Theoretically, they appear to be quite sound, but functionally they are utopian in nature. He has not provided any framework for the workable form system of education. तो ये कुछ इसमें पॉइंट्स थे, इस तरह ये भी इसका है कुछ ड्रॉबैक्स।